So very good morning to my dear aspirants. Today's our the first class, that is MCQ class 1, that is of the UGC-NET paper 2 mass communications and journalism. It is very important class, so please focus and please pay focus on all the questions that we have here taken. Okay, so first question it is here from the what is dealt with the Firoze Gandhi Act. Okay, so Firoze Gandhi Act, that what was dealt with Firoze Gandhi Act. आपका पेपर 2 है, you are the aspirants for the paper 2. So without option, try to give answers without options. Never wait for the options, okay? So that you have to answers without options. So if anybody can answers without options, they are allowed to answers. So definitely it will be proud for us, right? So what was dealt with in Firoze Gandhi Act? The first here that publications of the parliamentary proceedings, B, publications of the court proceedings, C, that is science reporting, and D, that is sports reporting. Everybody answer? Yes, I got the answers. Very good. Please आंसर्स कीजिए, सभी लोग आंसर्स करते रहेंगे. फिरोज गांधी एक्ट, फिरोज गांधी एक्ट, व्हाट वाज डील्ड विद द फिरोज गांधी एक्ट? चलिए, so yes, timer ends and the right answer here we have, that is options A. Very good, marvelous answers that you have given. That is of the publications of the parliamentary proceedings. Okay, parliamentary proceedings का publication होना चाहिए, ये फिरोज गांधी एक्ट में ये है. Okay, so that is dealt with the Firoz Gandhi Act. So here that what the questions can be. ठीक है, questions क्या क्या हो सकता है? First questions here, that is who introduced, right? I am writing the questions, please note it down. वो सारे questions आप लोग note down भी कीजिए, that parallel आप चलिए. ठीक है, just I'm writing here the questions, like the first questions can be from the questions, that is who introduced here this one, a private members bill advocating press freedom that later become as a parliamentary proceeding act. So please write it. Okay, who introduced Firoz Gandhi, यहां से आप स्टार्ट कर लीजिए. सॉरी, who introduced private members bill advocating press freedom that later as parliamentary proceeding, that is Firoz Gandhi. Yes, very good, that is questions number 1. Question number 2, that is here, that who said that this is not your house or my house, it is the house of the people? Who said, yes, who said that this is not your house or my house? ये आपका हाउस नहीं है और ना ही मेरा हाउस है, it is the house of the people, right? So that is what that this statement said by the Firoz Gandhi, right? Yes, very good, that statement said by the Firoz Gandhi. It is on their behalf that we speak or functions on this chamber, right? So these people have to right to know what their chosen representatives say or do. उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करती हैं, क्या कहती हैं, ये जनता का अधिकार है सुनना कि वो पार्लियामेंट के अंदर क्या कहते हैं, और वो चीजें पब्लिश होगी तभी हम चीजें हम पढ़ पाएंगे, जनता जान पाएगी. सो वो दैट ही वेयर एक्चुअली एडवोकेटिंग द प्रेस फ्रीडम, प्रेस की आजादी के लिए वो एक बिल समझिए एक लेकर आ रहे थे, बट दैट लेटर बिकम द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग द प्रोटेक्शंस ऑफ पब्लिकेशंस एक्ट. ओके, सो वो सारी चीजें आपको ये ध्यान रखनी है. फिरोज गांधी ने क्या कहा, कौन सा स्टेटमेंट दिया, विच स्टेटमेंट दैट Firoz Gandhi here given, and also that who advocated the press freedom that later become as a parliamentary proceedings act. Okay, so this is also important. Okay, that is Firoz Gandhi. It is all clear. So ये सारे questions यहाँ से clear होते हैं. Okay, now the questions number 2. Question number 2 is that about John Milton. जॉन मिल्टन का आपने नाम सुना होगा. जॉन मिल्टन का नाम सुनते ही एक ही चीज याद आता है, सो वो आपके आंसर्स में ही है. सो ठीक है, सो मिल्टन्स व्यूज ऑन द प्रेस फ्रीडम इज रेफर टू एज, एवरीबडी विदाउट ऑप्शंस ये सारे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए. यू शुड नॉट वेट फॉर द आंसर्स, राइट? सो दैट द बुक यू हैव टू नेम द बुक ऑन विच, राइट? So the Milton's view on the press freedom is referred to as, everybody
So you all are waiting for the options, right? Nobody is giving without options. So star chamber, areopagitica, and that is authoritarian, and that the social responsibility. Everybody, yes, everybody answers. What will be the answers here? That Milton's views, yani John Milton's views on the press freedom is referred to as what? प्रेस की आजादी पर मिल्टन का व्यूज है, वो क्या रेफर कर रहा है? दैट इज हियर द राइट आंसर इट इज एरोपैजिटिका. ओके, एरोपैजिटिका दैट वाज अ बुक एक्चुअली. वो एक बुक है जो 1644 में, राइट, 1644, that written by the English poet John Milton in the 1644. Please remember this year in the 1664 by the John Milton. He wrote it to protest against censorship, right? He wrote it to protest against censorship. Please write it. Very much important. That's why here written it is as about the press freedom. यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है that Milton's views on the that name the book that was written to protest against the censorship. That the book it is Areopagitica. Okay, so that is what that they will not give you the hint here that is John Milton. So that directly they can ask you name the book that written to protest against censorship, that you have to identify the book that written by the English poet John Milton, that is Areopagitica. Okay, that was written in the 1644. So basically Areopagitica, the full book title it is that a speech of the Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England. Okay, this is what the title here it is, the John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England. It is all right. Have you understood the concept that is about the Areopagitica that is written by the John Milton? Yes. Very good. Now the questions number 3. Question number 3, it is here that you have to answers that the new concept which is the outcome of the technological process in the communication is called as what? The new concept. एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना है, कौन सा ऐसा नया कॉन्सेप्ट है जो कि एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का आउटकम है कम्युनिकेशन के अंदर. व्हाट इज दैट? द न्यू टर्मिनोलॉजी, यू हैव टू नेम द टर्मिनोलॉजी, दैट इज व्हाट it is the outcome of the technological process in the communication, it is called as. Everybody, so here emergence, B incursion, that is C that is convergence, and D explosion. Everybody, very good. Everybody is answering yes. This is the questions from the terminologies. ठीक है, terminologies का ये questions है और आपको ध्यान रखना है. टर्मिनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोन एज, कॉल्ड एज, टर्म्ड एज, ठीक है, रेफर्ड एज, ये सारी चीजें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो प्लीज ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग तो ध्यान रखें. ठीक है, चलिए. A new concept which is the outcome of technological progress in the communication, it is called as convergence. ये आपका राइट आंसर है. सो यहाँ पर कन्वर्जेंस क्या होता है? बेसिकली कन्वर्जेंस जो होता है that is a two or more distinct things come together, the new concept which is called as convergence in the technological progress, that is the outcome. Okay, that we can take the example of convergence, that is of the smartphone or the mobile phone. Very good, monitor, that is a smartphone, right? So here we have the radio, televisions, right, the social media, the internet, or the alarm, or the calendar, or entire the things that we have to access in the smartphone only, that is the convergence example. Very good example of the convergence, that is of the smartphone. Okay, chaliye, I think it is clear to you. So nobody having any doubt till third 3 questions. Okay, chaliye. Question number 4. Question number 4, that is after how many years of the death of the writer the copyright on his book ends? राइटर की कितने मरने के कितने साल बाद उनकी लिखी हुई किताब के ऊपर कॉपीराइट खत्म हो जाती है? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ द डेथ ऑफ द राइटर द कॉपीराइट ऑन हिज बुक एंड्स. एवरीबडी विदाउट ऑप्शंस दे हैव गिवन द आंसर्स. वेरी गुड एस्पिरेंट्स, दैट इज हियर द ऑप्शन, इट इज 30 years, 40 years, C 50 years, and D that is 60 years. So everybody has given the answers without options, that you have given the answers. It is very much proud for us. Very good.
Marvelous answer that you have given. Still not, you have not given answer. Please answer. आप लोग आंसर्स दीजिए. चुपचाप बैठ के अटेंड करने की नहीं है क्लास. You have to answers, okay? Because if you answers, it will be in your mind. चलिए. So very good. The answer that is 60 years. 60 साल के बाद जो है आपके बुक की कॉपीराइट खत्म हो जाती है. ओके, राइटर्स के मरने के 60 साल बाद उनकी लिखी हुई किताब के ऊपर कॉपीराइट जो है वो एंड हो जाती है. सो दैट इज हियर दैट इट इज रिटन एंड क्वेश्चंस आल्सो द फ्रॉम द क्वेश्चंस यहां से एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन एक निकल रहा है. दैट इज अंडर विच सेक्शन, अंडर विच सेक्शन, under which section it prohibits the copying of an original work of various types. Yes, that is section 13. Section 13 of the copyright 1957. Okay, section 13 of the copyright 1957, it prohibits the copying of an original work of various types. That can be of the music, that can be of the books or anything. Okay, that can be any of the artistic work. So here it is very much important. Two questions here it is important about the section 13 and as well as that is the number of the years. Okay, how many years? That is 60 years. After 60 years of the death of the writer, copyright ends. Chaliye. Now moving towards the question number 5, that is here the title of the cartoon column इन द हिंदू इज. द हिंदू में एक कार्टून कॉलम छपता है, उसका टाइटल क्या है जो आपको बताना है. ओके, द हिंदू. ठीक है, इट इज वेरी ओल्ड क्वेश्चन. ठीक है, आज छपता नहीं है बट इट वाज पब्लिश्ड. सो हेयर द काउंटर पॉइंट, यू सेड इट ऑल इन द गेम एंड बिजनेस एज यूजुअल. एवरीबॉडी, द टाइटल ऑफ द कार्टून कॉलम इन द हिंदू इज व्हाट? एवरीबॉडी. Yes. Everybody answers. चलिए. So इसका answers that is here that is here that D, that here the title of the cartoon in the Hindu, that is business as usual. Okay, business as usual जो है आपका that is the published in the Hindu, that is cartoon column. Okay, that is here. Please understand and ये आपको याद रखना है. साथ ही साथ ये बताइए वेरी मच पॉपुलर यू सेड इट दैट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. किस न्यूज़पेपर में यू सेड इट पब्लिश होता है? एवरीबॉडी, यू सेड इट दैट पब्लिश्ड इन द विच न्यूज़पेपर? वेरी मच इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएंगे दैट यू सेड इट. आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट ऑफ ऑल्सो दैट यू कैन गिव. यू सेड इट एंड एज वेल एज द कॉमन मैन. ओके, the common man that published in the newspaper, everybody, they hear the answer, that is the Times of India. Okay, Times of India में you said it और the common man के नाम से Times of India में कार्टून कॉलम छपता था. और ये किस that cartoon column was of everybody, that is you said it and the Times of you said it and the common man was the cartoon column of the very famous cartoonist, that is everybody. You said it and as well as the common man, that is that published in the newspaper Times of India and by the R.K. Lakshman. Okay, chale, it is clear to you everybody. And as well as the business as usual, that is the cartoon column that published in the Hindu. Okay, it is all clear. Now the next it is here the question number 6. Question number 6, that is the first Director General of All India Radio was A. S. Bukhari, Lionel Fielding, C. that is Charles Barnish, and D. that is here everybody answers. सभी लोग answers करेंगे that the first Director General of the All India Radio was. Yes. So I think everybody is answering what happened. Everybody is answering Lionel Fielding. Okay. That the here answer is S. Bukhari. Lionel Fielding ने नाम दिया था ऑल इंडिया रेडियो का, राइट?
ऑल इंडिया रेडियो का, यस, ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया था बिकॉज अर्लियर इट वाज ISBS, that is very much confused name, right? So that's why the, yes, name given by the Leonard Filden, that is All India Radio. But the first director general was the एस बुखारी. एस बुखारी जो थे पहले डायरेक्टर जनरल थे. So in the 1936 एस बुखारी was offered the job of the deputy controller broadcasting of the All India Radio in the New Delhi, right? So that he promoted in the 1940 to the controller. डिप्टी कंट्रोलर से वो कंट्रोलर बन गए 1940 में, and that was that the designations was changed to the director general and served at this post until 1947. 1947 तक उन्होंने एज ए डायरेक्टर जनरल काम किया एस बुखारी. सो एस बुखारी इज हियर the right answers. A.S. Bukhari was the first Director General of the All India Radio. Okay, it's all clear. The confusion, it is clear now, everybody? Yes. So if it is asked to you that name given by that who named the All India Radio, that will be the Leonard Filden. Okay, chaliye. Now the questions here. The question number 7. Question number 7. It is here that the chairman of the Press Council of India is appointment for the term of, कितने साल के लिए प्रेस काउंसिल का चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है? Everybody, the chairman of the Press Council of India, that is here that 1 year, 2 year, 3 year and 4 year. Everybody answers. That is of the what answers? Yes, everybody is answering. Nobody is giving wrong answer. Very much, very good, very beautiful answers. Chaliye. So that here, that right answer here it is yes, that is 3 years. Yes. Okay, very good. That is, sorry, here it is the 3 years. It will be 3 years, that is C. So the chairman of the Press Council of India is appointment for the term of 3 years. Okay, 3 years is the right answers. Aapka, that is here the wrong one, that is C. Okay, that you can say, यहाँ पर आप देखेंगे that explanation here it is written and you will have lot of the questions from the explanations here, right? चलिए, the Press Council of India is here the formed in the 1966 by its parliament. Okay, so that the what the date it is, the when the Press Council of India was formed, that is of the 4th of July 1966 when the Press Council of India was formed. Okay, so the council has 28 members of the which 20 have to represent. We have told you about the structure also. हमने structure भी आपको बताया था कि कितने कितने क्या चीजें होती हैं. If it is asked to you, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि total members including the chairman, that will be everybody including the chairman, that is 29. Very good, that is 29. And excluding the chairman, they can confuse you, right? आपको confuse कर सकते हैं. If they ask you that excluding the chairman, yes, excluding the chairman, that will be 28. अगर chairman को हटाएंगे तो 28 और chairman को include करेंगे तो 29. Okay, so that you have to name the total members of the Press Council of India. So that is of the 29 including the chairman. Okay, चलिए, and they serve the term of the 3 years. The Press Council's chairman, they serve the term for the 3 years. Okay, चलिए, so questions here it is also, एक और questions यहाँ पे बनता है, that is first chairpersons. ठीक है, first chairman of the Press Council of India. Everybody, first chairman of the Press Council of India. Everybody, पहला chairman Press Council of India का पहला chairman. Everybody confused, totally confused, nobody is answering. चलिए, आप इसको find out कीजिए. This is what that you will clear it, right? You will clear it. That list of the chairman of the Press Council of India, it is given there. Okay, list of the chairperson of the Press Council of India, it is given. Please जो है आप लोग उसको ढूंढिए और उसको पढ़िए, and please share into the group also. Okay, उसको list of the chairpersons भी आप share करेंगे, that it will be very much beneficial for the everybody. Okay, so that is here in the given, that is in the quick revisions में आपका दिया हुआ है, वेबसाइट पे पोर्टल पे अपलोडेड है. So please go and find out. Okay, सिर्फ पहला ही नहीं, अभी करंट में जो है उनको भी याद रखना है और पूरे याद रखने हैं, सभी याद रखने हैं. Okay,
Because why all that you have to remember? Because they can ask you in the chronological sequence में भी आपसे पूछा जा सकता है. So this is what important it is, that who was the first chairperson of the Press Council of India and who is current as working as a Press Council of India chairpersons. Okay, चलिए. So these all are the that things that we have to clear. Okay, so चलिए क्लियर करेंगे, आप लोग सभी लोग क्लियर करेंगे. ओके, एंड यू विल शेयर द लिस्ट ऑल्सो. आगे बढ़ते हैं. दिस इज वर्क फॉर यू. सो क्वेश्चन नंबर 8 इट इज द वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द आईटीयू. आईटीयू का सेक्रेटेरिएट बताना है आपको कहां है. दैट इज जेनेवा, लंदन, वॉशिंगटन एंड द हैम्बर्ग. वेरी गुड. यस, बहुत सुंदर. यस, दैट इज जेनेवा. जेनेवा इट इज हियर द राइट आंसर. जेनेवा जो है आपका सही आंसर है. एंड दैट जेनेवा इट इज इन द स्विट्जरलैंड. दैट द सेक्रेटेरिएट ऑफ द आईटीयू इट इज इन जेनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड. सो आईटीयू दैट इज इंटर टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन. ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, दैट इज ऑफ द यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी. राइट, दैट इज ऑफ द यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आपका. रिमेंबर इट इज UN specialized agency that form for the informations and communication technologies. Okay, that you have to remember. So now here it is that it is also important, you have to know for the sake of the knowledge also, that Geneva that it is situated in the Switzerland. Now everybody, that the Hamburg किस कंट्री में situated है, जल्दी से बताएंगे. Hamburg, no. Yes, very good, that is in Germany. Rachna has said yes, Germany. Very good, जर्मनी. ये सब आप लोग ऑप्शंस भले ही हो, दैट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द एनीवेयर. ठीक है, थोड़ा सा आप फिर कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस पूछा गया है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछा गया है. दे आस्क यू फ्रॉम द पीवाईक्यू. राइट, पीवाईक्यू से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, और वहीं से आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चंस दिया जाता है. सो प्लीज फोकस ऑन दैट. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9, that is Public Relations Society of India that observes National PR Day on. Right? So without options, Public Relations Society of India, that is PRSI, observes National PR Day. When National PR Day is celebrated, everybody, कब celebrate किया जाता है? So option here it is April 21st, March 21st, April 20, March 20. Everybody answer? Yes. So here that the answer here it is, that is A. A जो है आपका 21st of April, it is the right answer. That is Public Relations Society, that PRSI observes National PR Day on the 21st April. And first All India Public Relation Conference, please try to focus here. First All India Public Relation Conference was organized in the Delhi, that is in the year 1968. ठीक है, पहला जो है ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज किया गया था 1968 में दिल्ली के अंदर. एंड द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज द प्रोफेशनल अप्रोच. ओके, द प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो क्या था, थीम था उस टाइम जब पब्लिक रिलेशन ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था पहली बार 1968 के अंदर दिल्ली में. तो उसका थीम क्या था, प्रोफेशनल अप्रोच. तो यहाँ पे आपको थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने हैं. सो दे कैन आस्क यू व्हाट वाज द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस व्हेन फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली. सो व्हाट इज दैट? एवरीबॉडी आंसर्स, सभी लोग आंसर्स कीजिए. व्हाट वाज द थीम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द थीम? यस, दैट इज ऑफ द प्रोफेशनल अप्रोच. प्रोफेशनल अप्रोच उस थीम का नाम था जब पहली बार ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली के अंदर 1968 में. ओके, सो फर्स्ट टाइम वाला जो चीजें है ना वो आपको याद रखना ही रखना है. ओके, 1968 में आपको ये भी इंपॉर्टेंट. नाउ द क्वेश्चन हियर इट इज, येलो जर्नलिज्म स्टार्टेड विथ रिपोर्ट मुर्डॉक, पुलित्जर, बीजी हॉर्नीमैन एंड विंस्टन चर्चिल. एवरीबॉडी, चलिए सभी लोग आंसर्स कह रहे हैं कि दैट इज बी, जोसेफ पुलित्जर. सो आप लोग ये भी बताएंगे कि दो जब सर्कुलेशन वॉर पढ़ते हैं, जब सर्कुलेशन येलो जर्नलिज्म का जब सर्कुलेशन वॉर पढ़ते हैं तो उस समय एक और जो है पॉपुलर जर्नलिस्ट का वहां पर नाम आता है, दैट इज एवरीबॉडी जोसेफ पुलित्जर एंड
Yes, very good. William Randolph. William Randolph. Okay. Yes. Joseph Pulitzer and William Randolph. ओके. जोसेफ पुलिजर का जो न्यूज़पेपर था वो क्या था? व्हाट वाज द न्यूज़पेपर ऑफ द जोसेफ पुलिजर? दैट इज न्यूयॉर्क वर्ल्ड. ओके, न्यूयॉर्क वर्ल्ड. एंड विलियम रैंडोल्फ न्यूज़पेपर्स क्या था? विलियम रैंडोल्फ का न्यूज़पेपर दैट इज न्यूयॉर्क. एवरीबॉडी? यस, दैट इज न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क जर्नल. यस, न्यूयॉर्क जर्नल. विलियम रैंडोल्फ का जो न्यूज़पेपर था वो न्यूयॉर्क जर्नल एंड पुलिजर का जो था वो न्यूयॉर्क वर्ल्ड. सो दे बोथ वेयर फाइटिंग फॉर द दैट विच न्यूज़पेपर हैज द सर्कुलेशन मोर. ओके, किस न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन मोर है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका अखबार बिकता है. So that they were fighting against that Joseph Pulitzer and William Randolph. They both were fighting for the circulations, right? So this was what that it was. Yes, it resulted in the Spain War. Yes, very good. Here the Abhilasa is here added the information that resulted in the Spain War. Okay, so that they were fighting for the circulations, right? So that the name here it is given the circulation war. तो आपसे कभी टर्म आ जाता है सर्कुलेशन वर्ड, that please try to understand the circulation war, that terminology that is related with the yellow journalism. और यही सर्कुलेशन करने के लड़ाई होने के कारण, फाइटिंग होने के कारण, because of the fighting only that the concept of the yellow journalism has started. They have sensationalized their headlines. उन्होंने हेडलाइन को सेंसेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया, हेडलाइंस को, that they sensationalism that they started विद द वर्किंग ऑफ द हेडलाइन. ठीक है, हेडलाइन के ऊपर उन्हें वर्क करना शुरू कर दिया और हेडलाइन पढ़ के लोग जो है वो अखबार को खरीदना शुरू कर दिए. सो दिस इज वर्ड दैट दे हैड स्टार्टेड द सेंसेशनलिज्म एंड आल्सो दैट कैन बी अंडरस्टैंड एज येलो जर्नलिज्म. ओके, सो अगर आपको टर्म आपको पूछा जाता है दैट हु हैज गिवन द टर्म दैट येलो जर्नलिज्म, ये टर्मिनोलॉजी किसने दिया? हु कॉइन्ड द टर्म येलो जर्नलिज्म? So that is the different answers. Yes, Erwin Wardman. Very good Rachna, that you have answered. And Erwin Wardman ने ये टर्म दिया, राइट? येलो जर्नलिज्म का जो कॉइन टर्म किया, एरविन वार्डमैन ने इसको टर्मिनोलॉजी और कॉइन किया टर्म. ठीक है, इट इज ऑल क्लियर, द कॉन्सेप्ट इट इज क्लियर टू यू एवरीबॉडीज. चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं. Okay, this was the question number 9. This was the last question. So actually, okay, so that is what the question. I think you have enjoyed the lot the questions. Okay, सभी questions आपको अच्छा लगा? चलिए, so thank you to everybody. Yes.